वेलकम टू जेके पीएससी टॉपर्स। आज का हमारा जो मार्क 1 रहने वाला है, जो हमारा प्रीलिम्स 23 फरवरी को होने वाला है, आज हम उसका मार्क 1 करने वाले हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। इंडिया और सेंट्रल एशिया को इनमें से कौन कौन से पासेस कनेक्ट कर रहे हैं? खैबर, बोलन, खुर्रम, गोमल। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। 1, 2 and 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, all of the above। आप इसका आंसर 5-6 सेकंड्स में दे सकते हैं। तो इसका हम आंसर देखेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी है। खैबर पास जो है, विच गोज ओवर द हिंदू कुश माउंटेन्स एंड कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट between Central and South Asia for thousands of years. It now connects Afghanistan's and Pakistan's modern cities of Kabul and Peshawar. Bulan. This pass is located in the Balochistan province on the southwestern part of Pakistan, 120 kilometers far from the Afghanistan border. Strategically located, it is one of the two main routes from Afghanistan into Indian subcontinent, along with Khyber Pass further north. Khurram Pass is a mountain pass located in the Hindu Kush mountain range in Afghanistan near the border with Pakistan. It has an elevation of approximately 3800 meters and serves as an important route connecting South Asia with Central Asia. The pass has been since ancient times for trade and migration, and has been mentioned in the historical accounts dating back to the 4th century BC. Today it remains an important transit point for goods and people traveling between Afghanistan and Pakistan on the one side and Tajikistan, Uzbekistan and the Central Asian countries on the other. Gomal Pass connects Bolan and Khyber Pass, so it helps to connect the Indian subcontinent एंड सेंट्रल एशिया। इसका जो सही आंसर है, ये सभी पासेस इंडिया और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर रहे हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ पतलीपुत्रा वाज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंधका, सन एंड द गैंग्स। In the ancient period, Patliputra remained the capital for the Mauryas, Sungas, Guptas and other kingdoms. इन स्टेटमेंट्स में हमें बताना है करेक्ट कौन कौन सी है, यानी जो ये दो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से करेक्ट कौन कौन है। 5-6 सेकंड्स में आप आंसर दे सकते हो। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, यानी पाटलिपुत्रा मॉडर्न डे पाटना was city built by Ajatashatru in 490 BC as a small fort near river Ganges. It is situated at the confluence of the Ganges, Gandhaka and Sun rivers. Patliputra formed a water fort or Jalduga. Statement 2 is correct. It evolved as the capital of leading powers in the historical India, such as Shushunaga Empire, Nanda Empire, Maurya Empire, Gupta Empire and the Pala Empire. During the Maurya period, it evolved into one of the biggest cities in the world. As per the Greek politician, traveler and historian Megasthenes, during the Mauryan Empire, it was one of the early cities in the world to have a highly productive aspect of provincial self-government.
Later, Sher Shah Suri modernized Patliputra, which had existed in the deterioration from the 17th century and renamed it as a Patna. Substantial archaeological recesses have been formulated in the proximity of New Patna. Recesses before 20th century through Patna disclosed obvious indication of huge fortress walls encompassing enhancing wooden trusses. Question number 3. Consider the following statements. Assertion: we find a number of rock-cut monasteries and temples in the Deccan region. Volcanic rocks are easier to cut into various forms. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. आप 5-6 सेकंड्स में जवाब दे सकते हैं। इसका जो सही आंसर रहने वाला है, numerous rock relief sculptures carved into rock faces have been found outside caves or at other sites. New discoveries of relatively small rock cut sites, mostly Buddhist, continue to be made in 21st century, especially in the Deccan, because volcanic rocks are easier to cut into various forms. यानी इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन ए, both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Question number 4. Consider the following statements. It is the passage across the Ghats from Kaveri Valley to the Malabar coast. It was an important trade route for the Indo-Roman trade in the ancient times. Which of the following statements are true about Palagat Gap or Palakat Gap? 1, 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. 5-6 सेकंड्स में आप जवाब दे सकते हैं। स्टेटमेंट आपने पढ़ी ऊपर, is the passage across Ghats from Kaveri Valley to the Malabar coast. It was an important trade route for Indo-Roman trade in the ancient times. इन दो स्टेटमेंट्स में कौन स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है बी, यानी 2 only. It was an important trade route for the Indo-Roman trade in ancient times. Question number 5. Consider the following statements. In the 3rd century BC, Sanskrit language served as a lingua franca of the country. Throughout the modern portion of India, India's inscriptions were written in the Prakrit language. Which of the above statements are correct? Only 1, 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. इसका जो आंसर हमें यहाँ दिख रहा है, तो इसका जो आंसर है स्टेटमेंट 1 जो है, यानी इन द 3rd century BC संस्कृत लैंग्वेज सर्व्ड एज एन लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द कंट्री, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, थ्रू आउट द मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज, ये स्टेटमेंट यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड जो करेक्ट है, यानी इसका आंसर आएगा बी ओनली। तो ये था हमारा आज का मॉक फर्स्ट JKS प्रीलिम्स 2025 का। अगर आपको मॉक अच्छा लगा, आप और मॉक चाहते हो,
तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट करो।